Good morning, my dear students. Myself, Dr. Girish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IIT University, Gwalior. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे. Students, today I am going to start our subject Rabi crop production for BSc Agriculture 7th semester. So let's start our topic about कल्टीवेशन ऑफ मूंग बीन क्रॉप पार्ट 2. स्टूडेंट्स, इससे पहले पार्ट 1 लेके आया था, ये पार्ट 2 है, हो सकता है पार्ट 3 भी आ सकता है. स्टूडेंट्स, आई विल इंट्रोड्यूस ऑल कंटेंट वन बाय वन एंड लाइक फर्स्ट सम इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट क्रॉपिंग सिस्टम एंड इंटरक्रॉपिंग एंड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स एंड सीजन्स एंड वैरायटी डेवलपमेंट, लोकल एडिप्शन and water management and weed management and pest management, harvesting, yield, outlines and then references. Okay, so students, before starting the topic I want to telling you about some points introduction. So students, green gram is also called moong or moong bean in Hindi, or golden gram is English in English. Students, its name is derived from the Sanskrit word mungda. Students, it is the most important pulses crop of Asia, especially India. Due to variety in its use, it can be used as dried mustard grain. Students, cooked grain and sprouted grains or after dueling as moong dal. Students, the moong sprouted are the special significance in most of Asian cookery. Beside its variety of culinary used, it is moong bean starch in used to prepare corn, cellphone model or jelly in many Asian countries like Korea, Japan and China. Students, it is a rich source of protein 24% and high fiber 16%, starch 62%, beside containing B3, B5 and B9. Students, as well as calcium 132 mg upon 100 gram and magnesium 189 mg upon 100 gram. Students, it is significant and fixation crop and included in most sequential system due to its short duration. Students, it is also a popular intercrop due to its uncompetitive nature in most system. It is dry stover as well as green plant, is rich in protein and useful cattle feed. It can be also be used as green manure crop. Students, green gram is excellent source of high quality protein in moong. Students, moong is consumed as whole grain sprouted from as well as dal. Students, in a variety of way in homes, it is also used as green manuring crop. Students, moong can be used as a feed for cattle. Even husk of the seed can be soaked in water as used as cattle feed. Students, in India these crops are cultivated in 3 different seasons like Kharif, Rabi and summer. Students, summer crop moong bean can be grown after harvesting of pea, gram, potato, mustard, linseed. Cultivation of Jayad moong is important to increases soil fertility in these areas where paddy wheat crop rotation is used. So students, this is generally introduction of moong bean crop. Okay, so students, next content है हमारा, first content है cropping system. Okay, so students, and green gram is compatible with most crops in intercropping, mixed cropping, relay and sequential system due to its short
duration, seasonal adaptability, nitrogen fixation ability, as well as its non-dominant nature. Students, some popular sequential system are: first maize, wheat, gram; potato, wheat, green gram, jowar, green gram, wheat. Students, important crops grow along with green gram in mixed system are pigeon pea, sorghum, permalate, and maize, while some crops like sugarcane, cotton, groundnut, sunflower, and sesame are grow as intercrops. So students, this is generally a cropping system. Okay, and नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग. Students, during Kharif movement are grow generally with maize, permalate, pigeon pea, and cotton as intercrop. Students, during spring mung bean is grow in 2:1 ratio with sugarcane with root to root distance of 90 centimeter, and from mung bean 30 centimeter distance. Students, maintain intercropping the sunflower as also suitable with ratio 2:6. So this is intercropping. Next content, students, manure and fertilizer. Okay, so students, mung bean is generally grow on the basis of fertility of soil. If available, it's a 10 tons of compost of FYM. Students, FYM is farm yard manure. Okay, should be applied before 15 days of sowing. Students, for mung bean 15 से 20 kg nitrogen and 30 से 40 kg phosphorus should be applied at sowing time. Students, it is advisable to use fertilizer on the basis of soil test and recommendations. Normally 100 kg DAP per hectare is not for 1 hectare. The fertilizer should be applied by drilling either at the time of sowing or just before sowing in such a way that they are placed about 2 to 3 centimeter below the seed. So students, this is fertilizer, manure and fertilizer. Okay, so next content है हमारा seasons. Okay, so students, there are different type season. Okay, students, first Kharif season. Students, mid June to first week of July, followed by throughout the country. Next, Rabi season. Students, adopted in monsoon follows or irrigated follow in third week of October to first week of November, grow on stored moisture without irrigation. So this is Rabi season. Next, students, late Rabi season. Okay, two type, timely and late. Students, sown is really crop is standing crop of rice in peninsular India between December to January end. So students, this is late Rabi season. Next, students, summer. Students, sown either as sole crop third week of March to second week of April, or as relic crop in standing crop the wheat April to May. So this is summer. Okay, so students, next है हमारा water management. Okay, so students, generally the Kharif crop require for one life saving irrigation which may be applied during the yearly pod formation stage. For the summer or spring mung bean 3 to 4 irrigation are required. Students, apply first irrigation after 20 to 24 days of sowing and repeat after 10 to 15 days as per need. Students, one irrigation before flowering and another at pot filling stage would ensure healthy seeds. Students, waterlogging in the field should be avoided at all cost. No irrigation should be given when the crop in full bloom stage. So students, this is water management. Okay, students, next content है हमारा weed management. Okay,
So students, two weeding should be given to keep the crop free from harmful weeds. Students, first weeding should be down 20 से 25 DAS में. स्टूडेंट्स DAS मीन्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ. DAS मीन्स होता है डेट आफ्टर सोइंग. ओके, डे आफ्टर सोइंग. फिर हमारा एंड सेकेंड 40 से 45 DAS यूज पेंडीमेथिलीन एट द रेट 0.75 से 1 kg 1 kg that is per hectare. Students, in 400 to 600 liter of water as a pre-emergency application, always felt nozzle is used during spraying of weedicide. So student, this is a weed management. Okay, next content, students, disease and pest management. Okay, so students, there are different type of disease and pest management, like first yellow mosaic, and second leaf spot, and third seedling root, and third clocal root, and next leaf curl, and फिर glycide and beetle, and leaf hopper, and red hairy caterpillar. So students, first of all, yellow mosaic. Okay, so students, yellow mosaic virus, like it is a serious disease in North India, characterized by diffused yellow spotted. Students, expanding to broad patches and a later turn completely yellow, resulting in yield losses. Students, it can be controlled by the use of resistant varieties Asha PDM 11 ml 337 or spray of 0.11% methoxystox plus 0.1% malathion 2 times at the rate 10 days interval. स्टूडेंट्स, ये येलो मोज़ेक वायरस है. ये क्या होता है, पत्तियों के ऊपर पीले पीले पड़ जाता है, पूरा प्लांट कहीं मतलब पीले पीले स्पॉट हो जाते हैं. तो इससे हम येलो मोज़ेक वायरस के कारण होता है. इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, ये अगर ये कहीं डिजीज दिखाई देता है तो क्या होता है, ये ईल्ड को लॉस पहुँचा है, ईल्ड में कमी आ जाती है. ठीक है, डिक्रीज हो जाती है इसकी ईल्ड. तो स्टूडेंट, हम लोग इसके लिए रेजिस्टेंट कुछ वैरायटी हैं उसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि आशा PDM 11 है, ML 337 है, और स्प्रे है, और हम स्प्रे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, येलो मोज़ेक वायरस को. फिर हमारा स्टूडेंट्स है नेक्स्ट लीफ स्पॉट. So students, leaf spot. Students, it can be caused by the fungi. Students, the former cause the gray central round spots of violet red color or leaf spots. Students, while the latter causes dark brown circular spots and later developing concentric rings. Students, both disease can be controlled by the spray menjocob or gem at the rate 2 kg per 1000 and 1 liter. ओके, सो स्टूडेंट्स, लीफ स्पॉट है, ये भी रेड वायलेट का कलर के दिखाई देते हैं. तो इसी कंट्रोल के लिए स्टूडेंट्स हम लोग ये डिजीज है तो हम लोग मेंजोकॉप जिम का भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज लीफ स्पॉट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा सीडलिंग. ओके, सीड एंड सीडलिंग रूट. ओके, so students, seed root seeds are young seedling are not and fail to germinate or emergent from a range of fungi. Students, it can be controlled by treating the seed by carbendazine at the rate 2.5 gram per kg of seed. इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा charcoal root. So students, charcoal root symptoms including rooting of roots and stem immediately above the soil within 1 month of sowing. Students, the plant dies due to these symptoms. It can be controlled by treating the seeds with 0.25% Versachlor and by the maintaining the crop rotation. So this is called root. Okay, and students, next है हमारा leaf curl. Okay, so students, leaf curl initial symptoms including yellowing of
margin in young plants. Students, which later curl downward and when showing reddish bone discording timely and stunting the growth, it can be controlled by spraying 0.1% methoxystox. ओके, इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रिंग. सो स्टूडेंट, दिस इज लीफ कर. नेक्स्ट है हमारा गलसिड बेटल. स्टूडेंट्स, टाइपिकल कैलकुलेट होल्स आर सीन on leaves while insect feed only during the night and hides during night. Students, it can be controlled by soil application of forate at the rate 10 kg per hectare के हिसाब से हम लोग सोयल में हम लोग मिला सकते हैं. ठीक है, सॉइल एप्लीकेशन. ठीक है, फॉरेट है. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा लीफ हॉपर. ओके, सो स्टूडेंट्स, leaf hopper, both of them suck the shape down, reduce the photosynthesis, but former appearance of the lower surface and causes curling of its. Students, while the latter result into crumpling of leaves. Students, they can be controlled by the spraying monocrotophos at the rate 1 ml per liter के हिसाब से हम लोग स्प्रे कर सकते हैं जब लीफ होपर लगा हो. ओके, तो स्टूडेंट सब लोग मेरे से पूछते हैं व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप में मैसेज करके, सर ये कौन सा है हमारे फील्ड में लगा, तो उनको जनरली बता ही देता हूँ, चाहे वो मूंगबीन हो या सोयाबीन हो, बहुत से लोग पूछते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रेड हैरी कैटरपिलर. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक बिहार हैटी कैटरपिलर होता है, ये रेड हैरी कैटरपिलर है. इट ईट्स विद द एंटायर ग्रीन matter of young leaves causing serious losses. It can be controlled by dusting 2% methoxystock dust at the rate 20 से 25 kg per hectare. Students, when caterpillar are young and spraying 0.15% methyl perthene. Students, when they are grown up. Students, this is red hairy caterpillar. Okay, स्प्रे कर सकते हैं. So students, this is disease and pest management. And next है हमारा हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरेज. ओके, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरेज. सो स्टूडेंट्स, मूंग should be harvested when more and than 80% pods mature. Students, 1 or 2 rounds or picking of pods are also recommended to avoid losses due to shattering. Students, the plant are cut with the sickle and dried on the threshing floor. Students, these are them then threshed by the beating with sticks or by trampling with the bulkers. Students, the clean seed should be sun dried off for 3 to 4 days to bring their moisture content at 8 to 10% to safely store in appropriate bins. So student, this is harvesting and threshing storage. Okay, next है yield. Okay, so students, a well managed crop as indicated above may produce 8 से 10 quintal and in mixed crop yield 3 से 5 quintal grain per hectare. Students, in rainy season crop produce 10 से 10 quintal per hectare and summer crops produce 12 से 15 quintal per hectare. Students, in mixed cropping 3 से 5 quintal per hectare. So students, ये तो हमारा yield था. ओके, तो दिस इज, फिर हमारा नेक्स्ट है आउटलाइंस. ओके, सो स्टूडेंट्स, आउटलाइन. ओके, सो फर्स्ट है हमारा आउटलाइंस. क्या इसका निकला इसका? स्टूडेंट्स, डीप समर प्लाउइंग वंस इन 3 years. ओके, एंड नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट शुड बी डन बिफोर सोइंग. ठीक है, सही समय पर हम लोग सीड सोइंग के पहले सीड ट्रीटमेंट करें. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एडोप्शन ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट वैल्यू. स्टूडेंट्स, हमको सॉइल टेस्ट करके फर्टिलाइजर का पता चलेगा कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसको हम अप्लाई करें. फिर हमारा इन खरीफ सीजन सोइंग शुड बी डन बाय राइज एंड फॉरो मेथड. ओके,
स्टूडेंट्स येलो मोजिक रेजिस्टेंट टोलरेंट वेराइटीज नरेंद्र मूंग 1, पंत मूंग 3, PDM 11, 130 मैम सम्राट PDM 11 and MUM2 ML, they are different type of variety etc. चूज एज पर सुटेबिलिटी ऑफ रीजन के हिसाब से जो सुटेबल हो वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स से हमारे पॉइंट है स्टूडेंट्स वीट कंट्रोल शुड बी डन एट ए राइट टाइम। स्टूडेंट्स सही समय पर हमको वीट कंट्रोल करना है। सो दे आर चाहे वो डिफरेंट टाइप वीट कंट्रोल कल्चरल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, कोई भी मेथड हो, दे आर शुड बी डन एट राइट टाइम। हमको सही समय पर अप्लाई करना है। कोई भी चीज़ स्टूडेंट अगर हम सही समय पर करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है, कंक्लूजन काफ़ी अच्छा आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडॉप्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, ओके। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू डिस्ट्रिक्ट KVK या नियरेस्ट KVK। स्टूडेंट्स हमको अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मतलब डेवलप करनी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग हमारे नियरेस्ट की KVK मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र हो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के KVK हो या फिर कोई नियरेस्ट इंस्टीट्यूट हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे जाके हम लोग टेक्नोलॉजी को पता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये तो हमारे आउटलाइंस था। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा दिस टॉपिक इज़ फिनिश, ओके। तो आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ मूंग बीन क्रॉप पार्ट 2। तो इससे पहले पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ें और जो भी आपका डाउट कुछ है तो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा वेबिनार के थ्रू। और वैसे भी सभी लोग मेरे से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं सर ये, तो उनको डाउट क्लियर हो ही जाता है। तो प्लीज़ आई होप आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।